સેલવાસ પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે સ્પેશિયલ જુવેનાઇલ પોલીસ યુનિટ માટે તાલીમ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। આ તાલીમ કાર્યક્રમમાં કાયદાકીય જોગવાઈઓ અને બાળ મનોવિજ્ઞાન જેવા મહત્વના વિષયો પર તજજ્ઞો દ્વારા વિસ્તૃત માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું। નમો મેડિકલ કોલેજ એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ડોક્ટર નયન શોભાજી દ્વારા બાળકોના વર્તન અને તેમની સાયકોલોજીને સમજવા અંગે ઉપયોગી માહિતી આપવામાં આવી હતી। हमारी ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी किशोर वय के बालक है या कोई भी आदमी जो किशोर वय का है या जो भी कोई बच्चा है उसको अपराध की दुनिया से दूर रख सके। और अगर यदि वो किसी भी हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है लॉ के साथ, तो उसको चाइल्ड फ्रेंडली मैनर से हम लोग उसको कैसे सॉल्व कर सके ताकि वो आइंदा ऐसे कोई अपराध या गतिविधि में शामिल ना हो। અમારી કાયદાકીય જવાબદારીઓ સમજાવવામાં આવી છે। જુવેનાઇલ જસ્ટિસ એક્ટની કલમ 63 હેઠળ બાળકો સાથે કેવી રીતે સંવેદનશીલતાથી વર્તવું અને કાયદાને પાલન કેવી રીતે કરવું તેમનું उत्तम मार्गदर्शन आप्યું છે। और यह ट्रेनिंग नालसा के गाइडेंस के हिसाब से दिया गया है। और ये ट्रेनिंग में बच्चों को रिमांड में कैसा प्रोड्यूस करना है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसके बाद उनकी जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में बच्चे के जो बिहेवियर है उसके ऊपर हमें कैसा ध्यान देना चाहिए और उन पे क्या उपाय योजना करना चाहिए। जो ट्रायल केसेस रहते हैं जुवेनाइल बोर्ड में, उनको कैसा हैंडल करना चाहिए, रिमांड में कैसा पेश करना चाहिए, ये बारे में जानकारी दी है।